Hello guys, so today we'll be doing another cue card. Describe a law on environment protection. The sub questions are: what is it? How you learned about it? Who benefits from it? And explain how you feel about this law. यानी कि ये लॉ कौन सा है, आपको इसके बारे में कैसे पता चला, इससे किसको फ़ायदा होता है, एंड एक्सप्लेन कीजिए कि आपको इस लॉ के बारे में क्या फीलिंग आती है या आपके विचार इसके बारे में क्या है. So let's go ahead to introduction. There are a number of rules and regulations implemented for the protection of our surroundings. Now I have to pay attention over here that I have used rules and regulations instead of law because it is a synonym, and we need to use good vocab to achieve higher marks in the lexical resource. और environment की जगह मैंने surroundings use किया है, another synonym. One such law is Conservation of the Forest Act 1980 that prevents unnecessary cutting down of trees and maintaining the ecosystem. So एक law है Conservation of Forest Act जो prevent करता है cutting down of forests, यानी कि trees and forest को cut down होने से prevent किया जाता है, which helps to maintain the ecosystem. अब ecosystem is a good vocab. It consists of all the organisms living together in an environment. In the recent times, there was a burning issue when the Arna forests in Mumbai were being destroyed for metro rail project. Now you have to pay attention over here that a burning issue is an idiom, यानी कि ये present time का एक important event है, यानी कि एक मुद्दा है जो काफ़ी attention gain कर रहा था. So it is an idiom, burning issue. Let's go ahead. Although I knew about this law since my school days, I got to know about it in a greater depth when this problem surfaced. It was all over the news. Now this is the answer to the question, when did you come to know about this law? So I have used connector. Although मुझे ये चीज़ स्कूल डेज से पता थी कि ऐसा एक लॉ एग्जिस्ट करता है, पर उसके बारे में ग्रेटर डेप्थ में पता चला जब ये प्रॉब्लम आई, यानी कि प्रॉब्लम सरफेस्ड. इट इज़ अ गुड वोकैब. इट वॉज ऑल ओवर द न्यूज़, यानी कि ये हर जगह न्यूज़ में डिस्प्ले हो रहा था. Indubitably, this rule is made for well-being and betterment of the citizens, as forests play a vital role in our lives. Now you have to again pay attention over here that I have used indubitably, which is a high band vocab. I could have used undoubtedly, but वो बहुत commonly use होती है. उसके लिए एक another option है indubitably. सो दिस आंसर्स द क्वेश्चन कि ये किसको बेनिफिट करता है. तो ये जो लॉ बना है वो हमारे ही बेनिफिट के लिए बना है, क्योंकि फॉरेस्ट का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ्स में. अब आते हैं हम इम्पॉर्टेंस पे. वी आर हेविली डिपेंडेंट ऑन दीज प्लांट्स फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ टू द फूड वी ईट. मोरोवर वी गेट अदर आइटम्स लाइक मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक्स एंड डिटर्जेंट्स फ्रॉम इट. यानी कि हम काफ़ी डिपेंडेंट हैं इन प्लांट्स पे. For the air we are breathing to food we eat. Now you have to again pay attention कि मैंने moreover एक connecting link use की है यहाँ पे. It is different again. So this is going to be achieving the fluency as well as it is going to give you coherence while you are speaking. Let's go ahead now. Besides this, it also provides shelter to diverse animal species. They are home to 80% of world's terrestrial biodiversity and also form the source of livelihood of many different human settlements, including several indigenous communities. Now we have to see here that मैंने besides this use किया है. ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जब हम देते हैं तब उसके लिए कनेक्टर यूज़ होता है. पहले हमने मोरोवर यूज़ किया था, अब हमने बिसाइड्स दिस यूज़ किया है. तो हम मेक श्योर कर रहे हैं कि हम वेराइटी ऑफ कनेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं. सो ये जो फॉरेस्ट्स हैं वो शेल्टर देते हैं डाइवर्स एनिमल स्पीशीज़ को. टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो होते हैं जो लैंड पे रहते हैं, एंड बायोडाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड ऑल्सो फॉर्म द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ मैनी डिफरेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स. यानी कि ये फॉरेस्ट में बहुत सारे लोग रिसाइड भी करते हैं, इंक्लूडिंग सेवरल इंडिजिनस कम्युनिटीज़. इंडिजिनस मतलब लोकल, यानी कि जो हमारी ट्राइब्स हैं जो फॉरेस्ट्स में रहती हैं, अगर हम कट डाउन करते हैं फॉरेस्ट को तो दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड.
So indigenous communities is a high band vocab word. You should remember this word. They play an instrumental role in watershed protection, prevention of soil erosion, and mitigate climate change as trees play a role in the absorption of carbon dioxide. If this doesn't happen, greenhouse effect would cause global warming, then in turn will lead to environmental catastrophe. अब अगेन एक इम्पॉर्टेंस है फॉरेस्ट्स की कि वो वाटरशेड मैनेजमेंट में एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करते हैं, सॉइल इरोजन प्रिवेंट करते हैं. एंड यू हैव टू सी के मैंने मिटिगेट यूज़ किया है. मिटिगेट इज़ अ हाई बैंड वोकैब वर्ड फॉर लेसनिंग समथिंग लाइक trees help to lessen the climate change because they absorb carbon dioxide which is released by various sources and because of which the global warming is caused. So अगर absorption नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ग्लोबल वार्मिंग इसी रेट पे कंटिन्यू होती है तो दैट विल लीड टू एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी. अब कैटास्ट्रॉफी मीन्स अ सडन डिस्ट्रक्शन and environmental catastrophe is a high band vocab word, so it is good to use it in this cue card. Therefore, such laws are essential to implement. Despite human beings made aware about negative consequences of cutting down forests, they are turning a deaf ear towards it. यानी ये laws बहुत एसेंशियल हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि ये लॉज होने चाहिए. पर इसके लॉज के होने के बावजूद भी ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट टेकिंग दीज लॉज सीरियसली and they are being made aware about the negative consequences as well, but they are turning a deaf ear. Deaf ear means it is an idiom which means that हम सुनने के बाद भी अनसुना कर देते हैं. In fact, people and organizations should be heavily reprimanded if they still continue with these illegal activities. They can be levied with fines if needed because drastic times require drastic measures. Now you pay attention over here that reprimanded means उनको डांटा जा सकता है, फटकारा जा सकता है अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी फॉरेस्ट कट डाउन करती है और ज़रूरत पड़े तो उनको फ़ाइन भी चार्ज करना चाहिए सो दैट दे डिसकंटिन्यू दिस एक्टिविटीज़. ड्रास्टिक टाइम्स रिक्वायर ड्रास्टिक मेजर्स इज़ एन ईडियम विच मीन्स दैट जब देयर इज़ अ नेसेसिटी तब हमको एडवर्स स्टेप्स लेने पड़ते हैं. So this is a good idiom which you can use in this cue card. Additionally, if it is absolutely necessary to cut down trees, then afforestation should be promoted. You have to see here that I have used additionally, which is another connecting device instead of moreover and besides this. So we are getting a variety of connecting words here. Conclusion, hence such enactments by the governing bodies are imperative. Again, you have to note down that enactments is a good synonym for laws. So this way you can use different words for law and achieve high band score in the lexical resource. Afforestation का मतलब होता है planting of trees, which is also a good vocab. Thank you for watching this video. If you like this content, please share it with your friends and subscribe to this channel. Thank you once again.